नंबर 4। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ब्रैड मैक अपनी टीम के साथ द केज नाम की एक जगह को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। कहा जाता है कि इस जगह का इतिहास काफी डरावना है। 18वीं सदी में ये बिल्डिंग को एक जेल की तरह यूज किया जाता था, बट कोई नॉर्मल जेल की तरह नहीं, बल्कि इस जेल में काला जादू करने वाली औरतों और विचेस को रखकर उन्हें सजा दी जाती थी। ब्रैड मैक का कहना है कि इस जगह की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों को किसी के कदमों की और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी और कई बार तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उन लोगों को छू रहा है, बट ये तो कुछ भी नहीं। बाद में उस रात जब वो लोग एक कमरे में उस जगह पर अपनी जान गंवा चुकी एक औरत की स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए सेंस नाम की एक रिचुअल को कर रहे थे, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। Face has completely changed. Doesn't even look like a person. Right, Debbie, you need to come down here for a minute, please. Weird, man. Her eyes were black. What the f? उस ग्रुप की एक लेडी का चेहरा अपने आप एक भयानक शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसकी नाक स्ट्रेच हो गई, उसकी आंखें चमकने लगी और उसके फेशियल फीचर्स भी काफी खौफनाक हो गए। उस ग्रुप की सेफ्टी के लिए ब्रैड उस लेडी को वहां से भेज देते हैं और मिस्टीरियसली एक अच्छे मोटे स्वेट जैकेट को पहना होने के बावजूद भी उस सियोंस के बाद उस लेडी के पीठ पर अजीब से बर्न मार्क्स दिखने लगे। सो व्हाट यू थिंक? क्या उस सियोंस के वक्त वाकई में कोई आत्मा उस औरत की बॉडी में आ गई थी या फिर यू हैव सम बेटर एक्सप्लेनेशंस? नंबर 3। आरएमएस क्वीन मैरी शिप 1940 के वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के फौजियों के लिए और उसके बाद एज अ क्रूज शिप 1970 तक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में चला करती थी। अब जाहिर सी बात है कि इस शिप पर बहुत सारी अच्छी बुरी घटनाएं तो हुई ही होगी, जिसमें शामिल है एक छोटी बच्ची का शिप के स्विमिंग पूल में डूबकर अपनी जान गंवा देने का वाकया, जिसके बाद से मशहूर हुआ उस लड़की का स्विमिंग एरिया में देखे जाने का और उस स्विमिंग एरिया के हॉन्टेड होने का अफसाना, जिसका लगभग उस शिप पर काम करने वाले लोगों के साथ कई सारे सवारियों ने भी दावा किया। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने उस छोटी बच्ची को देखा, बल्कि अक्सर उन्होंने एक औरत के भूत को भी देखा जो उन्हें उस हॉन्टेड एरिया में किसी तरह बुलाया करती थी। चूंकि ये बातें काफी मशहूर हो गई थी तो अथॉरिटीज ने भी उस स्विमिंग एरिया के आसपास जाने से लोगों पर रोक लगा दी और अब ये जगह कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड जोन है। खैर, मशहूर लेखक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ब्रैंडन एल्विस ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से आत्माओं और भूतों की खोज और रिसर्च को डेडिकेट किया है। बट खुद ब्रैंडन का कहना है कि उनकी आज तक की सबसे दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन आरएमएस क्वीन मैरी शिप की ही है, जिसके बारे में वो बताते हैं कि जब ब्रैंडन और उनका क्रू उस स्विमिंग एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्हें अजीब मनहूस आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उन्हें वहां से गेट आउट कहकर चिल्ला रहा था। और उसके बाद जब ब्रैंडन अपने साथी के साथ उस हॉन्टेड स्विमिंग एरिया में बिल्कुल अकेले थे, उन्होंने एक काफी टेरिफाइंग चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। हम देख सकते हैं कि कोई चमकीली आंखों वाला अपैरिशन ब्रैंडन की ओर उस कोने से झांक रहा है। ब्रैंडन का कहना है कि जब वो लोग वहां मौजूद थे, उन्हें उस जगह पर कोई दिखाई नहीं दिया, तो आखिर ये चमकीली आंखों वाली लड़की उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रही थी? नंबर 2। जोसाया वॉर्ली अपने टिकटॉक पर शॉर्ट व्लॉग्स अपलोड करते हैं और जोसाया को बहुत शराब पीने की आदत है और वो इस बात से बिल्कुल नहीं शर्माते। कई बार तो वो इतनी पी लेते हैं कि उन्हें ये भी ख्याल ही नहीं रहता कि वो अपने टिकटॉक अकाउंट पर क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं। Not to sound like a douchebag, dumbass, whatever, but I don't know how to use TikTok, so I'm using Snapchat. I'm still drinking. बट जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उनके टिकटॉक अकाउंट का कंटेंट भी चेंज होने लगा, क्योंकि जोसाया मानते हैं कि उनका घर हॉन्टेड है और वो डेली बेसिस पर अपने घर में होने वाली अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को टिकटॉक पर पोस्ट करने लगे। Am I tripping? Am I tripping? You see that? Oh, okay. Can you not do that, please?
Yeah, I'm leaving. So I recorded all that shit on my table. I recorded everything that's going on right now. There's no wires, no strings. You got my hands right here, but something's moving on my goddamn table, and that's really irritating. Please stop. Please don't. Please, please, please. There's so many things flying across my screen. I feel like it's dust. It's got to be dust. I'm gonna take a shot. Mom? No. No. No way. Yeah, my freaking door just opened. And it's closing. As you can see, I put it back on his f***ing thing. I'm about to go lay it back down, and I'm gonna hope to God that nothing f***ing does any weird shit, because I feel like there's weird shit right there. But at the same time, it could be friendly. Oh God, now look at me. I'm starting to sound like a f***ing weirdo. You got weirdos and shit like that? I'm gonna take another shot. Hold on. Okay, move that. Do you see that? What? I don't know what to do. I'm also scared to show you guys my face because I look pretty f***ing ugly, but here you go. Yo, YOLO. What's good, bro? Bro. Bro. Are you good, bro? You good, bro? Do you see any f***ing strings? Did you guys see it move? एक दोपहर जोजाया अपने घर पर हो रही इन कांस्टेंट एक्टिविटीज से परेशान होकर ब्रेक लेने का फैसला करते हैं और वो अपने घर से बाहर निकलकर घूमने जाते हैं। बट जैसे ही वो अपने घर पर वापस आते हैं, उनके साथ होने वाली एक्टिविटीज और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। So for like a whole day, nothing has been going down, and then this happens. Okay, there's nothing. I even brought over somebody. I don't know why the she's fast asleep. I've been drinking a little bit. Maybe it's only when I get drunk. But regardless, dude, that's really up. You shouldn't be doing that. You shouldn't be doing that. You should not. You should not be doing that. Please stop doing that. Okay? Okay. Stay there. Be chill. I'm gonna leave. Sorry, but I'm gonna leave. I'm really sorry for that. That light shut off. There's a switch right there. It got switched off. Turning off this light. It. I was laying in bed watching some damn shit. This turned off. Then I went to go grab a drink for some. Are you joking? Can you please stop? Do you see? This is starting to get more sketched out. Actually, to be honest with you, like I'm starting to get more scared. Like, as we go along. सरप्राइजिंगली इन खौफनाक एक्टिविटीज को सिर्फ जोजाया नहीं बल्कि उनके फ्रेंड्स ने भी कई बार विटनेस कर रखा है। I really wish I recorded it. That thing fell over twice. 2 times, not once. Twice. And this fucker, I just picked it up. This over here is acting like nothing ever happened. If you don't imagine it didn't happen. If it didn't happen, it didn't happen, huh? Look the Okay. other way. Well, we're about to leave. I'm out here. That's a जोजाया अब तक इन सब क्रीपी एक्टिविटीज को नशे में हैंडल कर लेते थे, बट अब उनके घर पर होने वाली चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है। I just got off of FaceTime with my friends Bree and Liz, and they were saying that something was in the f***ing hallway. No, it's in the kitchen. It's in the kitchen, bruh. Oh, that chair fell over. Hey, I'm really. Oh my god, I hit myself. Anyways, I'm drunk. Can you
I don't know if I'm even recording. I don't know if I'm okay with being here. I'm gonna end up leaving. I'm not a bitch. At least I didn't think I was. But I'm starting to progressively become more scared. It's like, oh God, you just can't really handle that. That's not real life, is it? Oh, I need to take another shot. ऑफ कोर्स जोजाया कुछ व्यूज बटोरने के चक्कर में इन सब एक्टिविटीज को फेक भी कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम उन्हें सचमुच रोते हुए देख पा रहे हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अब कितने बेबस हो चुके हैं। बट स्टिल, व्हाट यू थिंक? इसी तरह की और भी ज्यादा स्पूकी चीजों को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नंबर 1, इंटरनेट पर मौजूद बाकी मिस्टीरियस वीडियोस की तरह इस नेक्स्ट वीडियो के सोर्स के हवाले से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इस वीडियो के कैप्शन से हमें यह पता लगा कि मैक्सिको में रहने वाले एक शख्स अपने घर पर अजीब एक्टिविटीज को महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करवा लिया और एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया। Ahí es que se mueve. Ya se movió. Ya Mira, se mira, mira, movió. mira, mira. ¿Qué piensa de eso, Luis, usted? No, mire. Mire, él ahí se va a levantar y ahí es que viene lo peor. ¿Y eso qué es? Eso, La Y madre. vea lo que me van a hacer a mí, como me jalan las patas. Mire, ¿Pero quién? yo ahí estaba durmiendo, ya era más tardecito todavía. Deje que vean mi video y ahorita le digo algo. En la casa del Carmen me asustaron más todavía, vea, vea. ¿Sí vio? En el Carmen me tocaron las cuerdas de una guitarra. Me tocaron las cuerdas de una guitarra. Eso dice como. Lo levanté. ¿Y eso que haya qué es? Es una bola que no sé qué lanzaron. Ahí va la silla, va la silla. Dios mío. दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर हम देख सकते हैं कि एक सोते हुए आदमी का पैर मिस्टीरियसली स्लाइड होकर हवा में उड़ने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसके पैरों को पकड़कर खींच रही हो। जिसके बाद वो शख्स की नींद टूट जाती है और फिर वो अपने साथी को नींद से जगा देता है। और जब उस शख्स का दोस्त उठने ही वाला होता है, सडनली वहां रखी एक चेयर मिस्टीरियसली स्लाइड हो जाती है। सो व्हाट यू थिंक? क्या उस एनोनिमस अपलोडर के साथ वाकई में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या फिर बस